Can we start? Nayan sir, please begin. Yeah. Yes, sir, I will. Hello. Hello. Yes. Yeah, sir. તમે introduction આપી દેશો ને આગળ. Yes. Yes. Yeah. Okay. 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 Welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar. I am Nayan Kumar J. Patel, working as a lecturer at the Mechanical Engineering Department, PITDS at Parul University. Parul University is awarded as the best private university in Western India award, at National Education Excellence Award by Praxis Media. Today we are presenting a webinar titled as a role of design engineer and the basics of a GD&T, presented by Honorable Speaker Mr. Mayank Umrania. If anyone has any query during the presentation, they can type them to my number 971 445 8809, and I will bring them after the presentation for the question answer session. So now, without further delay, we will turn the time over to the Mr. Mayank Umrania, our presenter. Yeah, sure, sir. Yeah. So welcome to everyone again. So my name is Mayank Umrania. I am senior CAD/CAM engineer at PMT Machines, Harvard. So basically, today's we are meet for what is the design and what is the role of the design engineer and some key features of design engineers and it's a pro tool and we can also say like it's a very necessary tools in a design department. Actually not a design department, it's everywhere works like production, QC and all departments. It's a very common tool in engineering field. It's a GD&T. Yeah. So today's our topic is design engineer role, and second is a GD&Ts. Yeah. Exactly, GD&T is a very large topic. It's a very big topic, but here I saw in a short time and with a you can say I show you like some shortcuts about GD&Ts and which mostly use in GD&T symbols in daily routines activity. So my experience in 5 years in design field or design field. Right now I am also like last 1 years. I also work in a CAM also. So we can I definitely pretty sure like about what is exactly GD&T and why it's necessary and required things in a batch production and mass productions departments. Yeah. So first, it's our small topics. Like it's a very simple. What is the role of design engineer? Yeah. So design engineer it means to optimize everything. क्लियर सो इट मींस कि हमको कुछ भी करके कुछ जो भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या कुछ मशीन डिजाइन कर रहे हैं उसको रिलेटेड हमको उसको ऑप्टिमाइज करना है सो वी कैन ऑप्टिमाइज उस मैन्युफैक्चरिंग टाइम इंस्पेक्शन टाइम assembly time packing time each and everything is like optimized clear so it's a very common thing it save time and consume time like consumptions कहाँ पे हो रहा है उसको सेव करना है सो बेसिकली व्हाट वी हैव मींस हमारे पास क्या होगा और हमको उसको कैसे कुछ बनाना है इट्स लाइक ऑल थिंग अबाउट डिजाइन इंजीनियर क्लियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास किसी भी पर्पस या कुछ पर्पस होगा या कुछ बेसिक टॉपिक्स होगा उसके रिलेटेड हमको कुछ भी डिजाइन करना है क्लियर हमारे पास कोई एक प्लास्टिक प्रोडक्ट का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि वी नीड वन एसी रिमोट क्लियर so we need to design like AC remote so how to AC remote is a mostly we all know it is a plastic generation so it's definitely material is a non metallic material and then we decide how many keys need in it has remote so number of keys like number of functions
Right now we can also like one key is a role play a role in like three functions. So it's a very like means अभी जो नई जनरेशन आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि एक ही बटन से हम लोग बहुत से फंक्शंस कर सकते हैं. सो इट्स अ रियल ऑप्टिमाइजेशन. लाइक राइट नाउ अभी हम लोग रिमोट्स में देख रहे हैं कि हमारे पास एक की है, उससे एक ही फंक्शन हो रहा है. लाइक ऑन ऑफ, एसी को ऑन किया ऑफ किया, टेम्परेचर प्लस 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 माइनस माइनस माइनस. क्लियर. अभी जो नेक्स्ट जनरेशन की जो डिजाइन आ रही है, सो हमको ऐसा स्मार्ट रिमोट चाहिए कि जिसमें एक ही की हो और मल्टी फंक्शनल हो. क्लियर. सो इट्स अ रियल ऑप्टिमाइजेशन. सो इट्स लाइक डिजाइन रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन. लाइक हमने डिजाइन रिलेटेड किया. अभी लाइक हमारे पास अगर एक स्विच का एक जो बटन है हमारा, उसके रिलेटेड हम लोग थ्री वर्क करने वाले हैं. इट मीन्स वी सेव अ थ्री रॉ मटेरियल्स ऑफ बटन्स. लाइक इफ हम प्रोवाइड अ वन only one button in compare with three buttons, then we save a material, we save a cost, overall product size, overall assembly cost, and like you understand like each and every type of cost we reduce. So this is a very simplest example of like optimization. So डिजाइन इंजीनियर का रोल यही रहता है बेसिकली, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इट्स टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग. हमको सब कुछ ऑप्टिमाइज करके अच्छे से बनाना है. लाइक अभी हमको लाइक दो पर्सन ए एंड बी की बात करें, तो ए पर्सन को भी हम लोग सेम टास्क डिजाइन करते लाइक अलॉट करते हैं कि भाई आपको एक रिमोट डिजाइन करना है या एनीवेयर कुछ भी आपको एक डिजाइन करना है. और या जस्ट मिनट. या सर अभी लाइक मैंने अभी जीडीएमटी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अबाउट लाइक स्टार्ट लाइक डिजाइन इंजीनियर्स टॉपिक्स. So design engineers like role is a design engineer is like to optimize something. So it's like just I just you know, like brief about exactly what is the field means ये फील्ड में हमको क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ थोड़ा. उसके बाद हम लोग जीडीएमटीज पे जाएंगे. क्लियर. सो डिजाइन इंजीनियर्स लाइक इट्स शॉर्ट मतलब हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि इट्स लाइक प्योरली टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग. क्लियर. सेकेंड लाइक ए पर्सन एंड बी पर्सन दोनों को हमने रिमोट डिजाइन करने दिया है. तो सीनियर पर्सन हो गए या कुछ आगे डिपार्टमेंट्स वाले हो गए, वो क्या सोचेंगे कि भाई किसने कम मटेरियल यूज करके फंक्शनल को यूज मतलब फंक्शनल जो भी हमने दिया है प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन लाया है, कितना मटेरियल यूज किया है. एस्थेटिक लुक, इफ वी आर लुकिंग अबाउट लाइक प्रोडक्ट्स देन वी आल्सो नीड अ एस्थेटिक लुक. If internal parts then it's okay, otherwise it's if it's outer parts then it's very important key feature like aesthetic look में कैसा होगा, उसके कलर्स कैसे दिखने वाले हैं, वो सब भी हमारे रिलेटेड रहते हैं. राइट नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैकेनिकल फंक्शंस देन मशीन्स आल्सो लाइक अभी राइट नाउ मशीन्स में भी कितना कुछ ऑप्टिमाइज होने लगा है. लाइक अभी अभी जितनी भी टेक्नोलॉजीज न्यू आने लगी है लाइक एएम पे भी सब लोग फोकस कर रहे हैं एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग. सो अभी पुराने जो फैब्रिकेशन कास्टिंग मोल्डिंग इंजेक्शन मोल्डिंग से सब था वो अभी जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा. अभी लाइक कार्बन फाइबर्स के कंपोनेंट्स बनने लगे हैं कार्स में भी, आपने देखा होगा सुना होगा. सो इट्स लाइक टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग. क्लियर. कार्बन फाइबर से हमारा क्या होगा लाइक पूरा वेट ऑप्टिमाइज हो जाएगा. क्लियर. so it's all about like design engineer. And if like agar aap interested students so like if you make a career with design then it's also like well decision because it's a very necessary like design की सभी जगह पे need होती है. clear. सेकेंड थिंग, अगर हम लोग डिजाइन के बारे में जा रहे हैं तो उसमें हमको बेनिफिट्स क्या क्या रहता है. तो व्हाइट कॉलर जॉब मिलती है, सैलरी ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है डिजाइन डिपार्टमेंट में. सेकंड आगे हमारे लिए फीचर्स में बहुत कुछ है लाइक दिस इज ओनली अबाउट CAD. It's not related about only CAD. It's also we have option about like CAM, computer aided manufacturing. Also about like very latest will CA, computer aided engineering. It means some type of static analysis, static FE analysis, and CFD analysis. So it means design department is a very basic and key feature. If we start something, each and every company start with a new projects and new work growth layouts. So it's necessary to means सभी को एक फर्स्ट ऑफ फर्स्ट जो स्टेप रहेगा वो डिजाइन रहेगा. क्लियर. तो वहां से हम काला कॉस्ट का प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन भी निकल सकता है, पूरा प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी निकल सकता है,
मतलब हमको सबके साथ रिलेटेड रहना है, लाइक क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, डिस्पैच है, सबके साथ हम लोग रिलेटेड रहते हैं. So that's why design like it is a head branch of any industry. Clear? So basically हम हमारा एक मेरा एक ही फंक्शन था आज आपको सबको समझाना, like what is design engineer. Clear? So I again repeat like it is a very simple and short language में बोले तो to optimize everything. Okay? हमको सबको optimize करना है. It means डिजाइन इंजीनियर का जो मेन फंक्शन रहने वाला है. क्लियर? उसका रोल है. अभी उसके साथ साथ दूसरे भी कई सारे फंडाज होते हैं, लाइक डिजाइन्स में स्पीड का भी जरूरत है, सम सॉफ्टवेयर स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट है, सम बेसिक थियरी नॉलेज का भी रिक्वायरमेंट्स है. राइट नाउ वी स्विच लाइक अभी हमने क्रिएटिव डिजाइन्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो इट मीन्स कि हम लोग किसी को कुछ नई डिजाइन रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो यूजिंग सॉफ्टवेयर ही कर देते हैं डायरेक्टली. ये अभी हम लोग ऐसा नहीं सोचने बैठते कि भाई ये कितना होगा वो कितना होगा. हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज पार्ट्स ऑलरेडी वेल डेवलप्ड हो गया, मतलब कि हमारी इंडस्ट्री अभी एक जो लास्ट 3 डेकेड से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास इतने स्टैंडर्ड्स ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट्स में, वो हम लोग उठा सकते हैं. लाइक ड्राइव पहले सोचना पड़ता था पुराने जमाने में, मतलब अगर मैं हमारी एक जनरेशन के बैक साइड जाए तो हमको एक सोचना पड़ता था कि मैं यहाँ पे कौन सी ड्राइव लगाऊं, हाइड्रोलिक ड्राइव लगाऊं, मोटर ड्राइव लगाऊं या क्या लगाऊं, वो सब हमको एक सोचना पड़ता था. बट राइट नाउ करंट जनरेशन में जस्ट नीड अ क्रिएटिव डिजाइन इन सम सॉफ्ट यूजिंग सम हेल्प ऑफ दी सॉफ्टवेयर. लाइक हमारे पास कैड टूल्स है, कैम टूल्स भी अवेलेबल हो गए और सीए टूल्स भी अवेलेबल है. बट डिजाइन इंजीनियरिंग मोस्टली यूज अ कैड टूल्स ओनली. इफ किसी को कुछ ग्रोथ करना है आगे जाके तो वो कैम या सीए में घुस सकता है, otherwise only we need a CAD tool only. Yeah? So different kinds of softwares are available in markets. It depends on your projects and it depends on your like how means project का कौन सा टाइप से, उसके रिगार्डिंग अच्छा सा एक टूल चूज करो, उसके बाद उसी पे डिजाइन करना हमारा ज्यादातर रहता है. So 90% depends on software skills and 10% is your creativity. Like आप में creativity कितनी है, क्योंकि डिजाइन सब लोग बनाने वाले हैं. A% B% दोनों का डिजाइन वैलिड ही है, कुछ तो सोचा होगा और हर फंक्शनली उसने देखा ही होगा, तो वो हमारे पास आने ही वाला है, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने ही वाली है. बट A% और B% में क्रिएटिविटी का डिफरेंस होगा, ऑप्टिमाइजेशन का डिफरेंस होगा. क्लियर? सो इट्स ऑल अबाउट डिजाइन इंजीनियर रोल. क्लियर? Now I start a very important and key feature of engineering engineering department में सबसे important चीज क्या रहती है, ड्राइंग रहती है. किसी भी चीज पे जाए हम लोग तो उसका ड्राइंग से ही बातचीत होती है, कुछ भी, मतलब एक वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टूल है हमारे लिए. सो ड्राइंग इज अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड की फीचर. लाइक हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि भाई इतने ओडी का शाफ्ट है, उतने डिस्टेंस पे लेफ्ट डायरेक्शन से इतने का ग्रू लगाओ, वैसे हम लोग ऐसे स्पीच नहीं कर सकते, मतलब बोल नहीं सकते. तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो भी कम्युनिकेशन था उसको हमने एक ड्राइंग पे रिप्रेजेंट कर, उससे हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे भाई ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ है. तो वहां पे दो चीज होती है हमारे पास, एक तो जियोमेट्रिक होती है और एक डायमेंशन होती है. सो जियोमेट्रीज हमारा जो भी डिजाइन है उसका शेप डिसाइड करती है, एंड डायमेंशन इसका मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल नो, इफ मींस हम लोग ने स्टार्टिंग में स्केलर एंड वेक्टर्स को कितना कुछ मतलब पढ़ा है उस पे ही, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी हमारे पास दो चीज होती है, जियोमेट्री एंड डायमेंशन. So geometry is like basically it's explain shapes and dimension explain its magnitude, like वो कितने का है. अगर कुछ रेक्टेंगल शेप है तो उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, उसके अगर 3D में बात करो तो थिकनेस कितनी है. तो इट्स ऑल अबाउट लाइक रिलेटेड ड्राइंग. क्लियर? सो नाउ उसके अलावा भी कुछ होता है. क्लियर? सो इट्स ऑल अबाउट GD&T. सो let us start our actual topics, GD&T. सो या इट इज ऑल्सो को पार्टनर विथ मीन्स हमने एक इंस्टीट्यूट्स के साथ भी लाइन अप किया है, लाइक बड़ौदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इट्स अ बीट, इट इज हैव अ 4 डिफरेंट ब्रांच इन बड़ौदा and some branches also in another city, but is a head is a 4 branch. So yeah, today's our topic is a GD&T. So here we can see like geometry, dimensions and tolerances here. So let's explain in brief. So exactly what is GD&T? So normally GD&T is a one type of design tool है. क्लियर? वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज करके
हम लोग कम्युनिकेट करते हैं डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्पेक्शन इंफॉर्मेशन। मीन्स क्या, हमारे जो भी डिजाइन में कुछ कुछ हमको रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसको हम लोग सिंबल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, और उसका कम्युनिकेशन किसके साथ होगा? डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सम काइंड्स ऑफ इंस्पेक्शन इंफॉर्मेशन। So its communications like with three departments: design, manufacturing, and quality departments. So exactly what is GD&T? So it's all, we all know it is a geometry, dimension, and tolerance. So here we can also see like geometry is a shape of model. Tolerances is a specific allowance in size and shape. I will explain why it's necessary, why it's required. Tolerance क्यों हमको जरूरत पड़ती है? Clear? Yeah. In variations, and dimension is a value of our dimensions. We can also say in second language, we can also say like dimension is a size of our part. Okay? So such a length, diameter, and etc. Why it's needed? Okay? So here I explain like in short, no one thing is perfect. मीन्स हमारे से कुछ भी परफेक्ट इंजीनियर्स अगर कुछ एक दो प्रोडक्ट्स बनाने हैं या कुछ 10 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हम लोग परफेक्ट बना सकते हैं. When we think about mass production या बैच प्रोडक्शन, then what? मीन्स हम लोग उसको 0-0 बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे. क्लियर? तो तब हमारे पास बिग क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं कि भाई ये क्या होगा इस चीज का. क्लियर? तो तब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसका क्लोज हम लोग कुछ अलाउंस देते हैं कि भाई ये प्लस इतना और माइनस इतना, प्लस और माइनस अलाउंस मिलेगा आपको, तो इट्स कॉल्ड अ टॉलरेंस. क्लियर? सो इट मीन्स कि जीडीएनटी नहीं था, उसके पहले टॉलरेंसेस तो था ही मार्केट में. क्लियर? बट आपको ये पूरा जो भी मैं बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जीडीएनटी का, तब आपको रियलाइज होगा कि व्हाई जीडीएनटी इज नेसेसरी. टॉलरेंस इज नॉट वर्क. मीन्स टॉलरेंस अकेला कुछ नहीं कर पाएगा. तभी है नया थिंग्स आया जीडीएनटी 1994 में आया था, लॉन्च हुआ था. राइट नाउ अगर बात करूं तो आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वाई 14.5 स्टैंडर्ड्स में इसका बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया है. Exactly what is GD&T and how much symbols in there and which can control, which can not control, which need atoms and why, which not means not need atoms and all. Okay? So what is like CAD design हमको क्या क्या डिफाइन करता है? मैंने ऑलरेडी पहले बोला, बट रिपीट आई ऑल्सो लाइक शेप, साइज, एंगल्स एंड लोकेशंस. ईच एंड एवरी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ड्राइंग्स में हम लोग को दिखता है. Like if I'm talking about local GIDCs and if I'm talking about like NASA and space, so it's also like ड्राइंग में आपको दो तीन चीजें दिखने वाली है. एक तो शेप है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, साइजेस मिलेंगे, एंगल्स मिलेंगे और लोकेशंस मिलते हैं ईच एंड एवरी फीचर्स के. नेक्स्ट की पार्ट ऑफ जीडीएनटी. सो एग्जैक्टली जीडीएनटी के मतलब कितने मतलब लाइक बेसिक्स का की पार्ट कौन से है, ये कौन से पार्ट्स उसमें रोल करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक डेटम. सो डेटम इट मींस वी कैन आल्सो से लाइक रेफरेंस. तो हम लोग किसी भी चीज का कुछ भी करते हैं तो उसको रेफरेंस के साथ करते हैं, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स. इफ आई एम आर्टिस्ट देन वी कैन डू एनीथिंग. लाइक ऐसे स्केच बना लिया, वो ओके डन हो गया. But we are engineers, so we need definitely datum. It's called also reference. Some features and feature size and उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल फ्रेम. सो तीन चीज हो गई, डेटम, उसके बाद फीचर्स. तो फीचर्स क्या है? इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ 14 टाइप ऑफ फीचर्स. वी आल्सो डिस्कस इन नेक्स्ट साइड्स. And what is control frame we also decide. Okay? So let's start. Yeah, and fourth thing is a material condition. Okay? So datum is a reference. It's the origin of measurements. It can be point, axis, planes, and combination of point, axis, and planes. Clear? It means वो शायद एक point हो सकता है रेफरेंस, वो एक शायद कोई एक्सिस हो सकती है अगर कुछ रोटेशनल डायनेमिक्स पार्ट्स है, सिलेंड्रिकल पार्ट्स है. Either it's a plane, either it's a combination of them also. Like इसका combination भी कर सकते हो. It's called a datum. नेक्स्ट, व्हाई डेटम इज रिक्वायर्ड. सो कि सम टाइम्स क्या होता है कि कुछ कुछ जीडीएनटी सिंबल्स ऐसे है कि जिसको डेटम्स इज अ वेरी नेसेसरी थिंग्स, लाइक डेटम चाहिए ही चाहिए. सम केस में हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसको डेटम नहीं होगा तो चलेगा, इट्स ओके. इन सम केसेस लाइक मे बी इट्स नीडेड एंड मे बी इज नॉट नीडेड. इट मींस कि हमारे रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड. क्लियर? So it's here we also group like 3 to 2 parts like not needed and maybe need and must be need. Clear?
So it's a तीन category: not needed, maybe not need, and must be need. So here we can see like flatness, straightness, circularity, and cylindricity is a not need. Means अगर आप इसमें कुछ GDNTs के symbols के items को नहीं डालोगे तो it's okay. It's self means ये individually है, fully freedom है. From datum, इसको datum चाहिए ही नहीं. Second is like maybe it's need and maybe it's not need. तो इसमें आता है profile of surface and profile of line. नेक्स्ट है मस्ट बी नीडेड. तो अगर ये जो पैरेललिज्म, परपेंडिकुलरिटी, एंगुलरिटी, पोजीशंस, कॉन्सेंट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी, सर्कल रनआउट एंड रनआउट को हम लोग डेटम नहीं देंगे तो इट्स इनवैलिड जीडीएनटी. मतलब क्या हम लोग इसको जियोमेट्री सिंबल्स जो है वो इनवैलिड प्रूफ हो जाएंगे. सो इट मस्ट बी रिक्वायर्ड डेटम फीचर्स. कंट्रोल फ्रेम. So control frame like it indicate a geometric constraint. अभी हमने जियोमेट्री एक्सप्लेन कर दिया, उसको डेटम भी एक्सप्लेन कर दिया, बट अभी भी उसको कुछ कंस्टेंट कर रहा है कुछ. क्लियर. सो इट्स अ कंट्रोल फ्रेम. सो लेट्स मोर अबाउट कंट्रोल फ्रेम. So you have a two type of control frame. It's like maximum material condition and least material condition. Clear. So now actual GDNT's topic is start like how it look, how what symbol indicate what things and all. Clear. So breakdown sensation like first of all is a MMC. So it's like short form of maximum material condition. If I'm talking about hole and internal feature, then MMC is the smallest size of hole. And if I'm talking about external features like pin or any external shaft diameter OD or something, then it's a largest size of pin or shaft diameter. Clear? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जैसा नाम वैसा काम है. लाइक मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन इट मींस के मैक्सिमम मटेरियल कहाँ पे, मतलब प्लस साइड हमारा टॉलरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एमएमसी कंडीशन में. अगर हमारे पास जीडीएनटी सिंबल्स में एमएमसी कंडीशन दिया है इट मींस के हमको पॉजिटिव टॉलरेंस के साथ लेना है हमारे पार्ट को. क्लियर. सो इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एम इन सर्कल. क्लियर. सर्कल में हमारे पास कैपिटल एम सिंबल कहीं पे ड्राइंग पे देखे इट मींस इट्स एमएमसी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन. सो एमएमसी इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम इंटरफेरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस. या डेफिनेटली अगर हम लोग प्लस साइड जाने वाले हैं तो हमारे कुछ भी पार्ट जो भी असेंबली में होने वाले वो इंटरफेस ही होने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम इंटरफेरेंस एंड मिनिमम क्लियरेंस है. इफ लाइक शाफ्ट के ऊपर बेरिंग लगाना है तो वहां पे हम लोग एमएमसी यूज करेंगे. वहां पे अगर शाफ्ट लूज हो गया एलएमसी में चलेगा इट मींस के शाफ्ट पे बेरिंग जो वर्क करना है उसको वर्क नहीं कर पाएगा. क्लियर. सो शाफ्ट के लिए हम लोग एमएमसी मींस अगर बेरिंग और शाफ्ट दोनों का फंक्शन है तो हम लोग एमएमसी यूज करेंगे. नेक्स्ट इज अ एलएमसी. क्लियर. अभी मैं थोड़ी कंडीशन चेंज कर रहा हूँ. क्लियर. के शाफ्ट के ऊपर बेरिंग तो लगाया है बट अभी जो शाफ्ट है ना उसको मैं किसी एक होल के साथ सपोर्ट करने वाला हूँ. बेरिंग निकाल दिया मैंने, बेरिंग नहीं चाहिए. क्लियर. सो लाइक होल के साथ मैं डिनोट कर रहा हूँ तो होल में वो चीज मैक्सिमम साइड होनी चाहिए. सो लाइक शाफ्ट वहां पे कौन सी कंडीशन में क्रिएट होना चाहिए. अगर होल है, फ्री होल है तो वहां पे शाफ्ट क्या आएगा, लीस्ट मटेरियल कंडीशन. क्लियर. So it's a symbol like capital L and it's like a small l. It is opposite, absolutely opposite of MMC like maximum material condition. So if hole की बात कर रहे हैं तो is a larger size of hole. If I'm pin like so is a smaller size of pin. Okay? And so use like definitely minimum interference and maximum clearance purpose. So it's all about like least material condition and maximum material condition. Let's start different type of 14 GDNT symbols. It's a very simple like we define our tool like different 5 categories में यहाँ पे हमने divide किए गए हैं. So first है form, second profile, orientation, location and runout. We can also like here I also like show like each and every 14 symbols को उसके name के साथ symbols explain किया है. नेक्स्ट साइड में हम लोग ईच एंड एवरी सिंबल्स को इंडिविजुअली लर्न करने वाले. क्लियर. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म टाइप. क्लियर. फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रन आउट. द फर्स्ट इज आवर फॉर्म टाइप. सो फॉर्म टाइप जो कैटेगरीज है वो क्या क्या कवर करते हैं जीडीएनटी सिंबल्स लाइक स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी एंड सिलिंड्रिसिटी. क्लियर. सो व्हाट इज स्ट्रेटनेस. वी ऑल नो
लाइक स्ट्रेटनेस इज अ कंट्रोल्स लाइंस एंड एज, मीन्स हमारी जो भी कुछ भी लाइंस या कुछ प्रोफाइल दिख रही है लीनियर प्रॉपर्टीज, वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए. इट्स अ वेरी simplest concept. Is we can measure as straightness very simply, like we just move a dial on our flat surfaces and we can measure like not our deviations on we can also see like our deviation on dials. Yeah? So straightness सबसे easiest GDNT symbol है. द कंडीशन वेयर एक्सिस इज अ स्ट्रेट, मतलब कि हमारे जो भी कुछ प्लेन है या कुछ भी है वो स्ट्रेट होना चाहिए. So yeah, each and every symbols right hand side bottom corner we can see their logo, like कैसा होगा ड्राइंग में. Clear? So next is a flatness. Flatness controls straightness with respect to plane. Straightness क्या होगा, it's a 2D objects, तो like it's control just one line, and flatness cover wall plane, like हमारे पास जितना भी सरफेस रहेगा वो सारी सरफेस को कंट्रोल करेगा. क्लियर? कंट्रोल करना मतलब हमारी जो फ्लैटनेस है वो कुछ टॉलरेंस के बीच में आनी चाहिए, लाइक प्लस और माइनस 0.1 दिया है तो इट मीन्स के उसकी वैल्यू प्लस और माइनस में 0.1 में ही आनी चाहिए. कॉल्ड फ्लैटनेस. वेरी सिंपलेस्ट थिंग्स. Circularity, like here I also saw some conceptual examples of circularity. So it controls roundness. तो राउंडनेस मतलब हमारे पास राउंड पार्ट होता है ना, उसमें कुछ कुछ एरर्स होते हैं लाइक ओवालिटीज एंड ऑल. सो उसको वो कंट्रोल करती है. लाइक टोटली सर्कल्स नहीं होते, समटाइम्स क्या होता है सेंटर के साथ हम लोग कुछ डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं तो वेरिएशंस दिखता है माइक्रोन्स में या मतलब वेरिएशंस दिखता है. इट्स कॉल्ड लाइक राउंडनेस ऑफ दी पार्ट. ओके, अनदर वर्ड वी कैन आल्सो से सर्कुलरिटी. सो इफ लाइक हियर वी कैन शो आवर एग्जांपल्स. ये एग्जांपल में आपको दिख रहा है सर्कुलरिटी क्या है. नेक्स्ट इज अ सिलेंड्रिसिटी. तो सिलेंड्रिसिटी आल्सो कंट्रोल अ सर्कुलरिटी एज वेल एज स्ट्रेटनेस ऑफ आवर पार्ट. Now topic is changed, like second category is a profile. So profile of line and profile of surface. It is also like we have a not a simple type of geometry like round, linear, ये सब मतलब arc है, वैसी geometries हमारे पास नहीं है. कुछ individual profiles है ये, क्योंकि we all know like in engineering in industry we can see like different types of geometries and different type of shapes are available here. सो इट मीन्स कि हम लोग ऐसा नहीं है कि लाइन और आर्क से ही काम चला लेंगे उससे सब कुछ हो जाएगा. क्लियर? सो तब हमारे पास कुछ डिफरेंट प्रोफाइल्स रहती है, तो उसमें भी दो टाइप लिए है हमने यहाँ पे, प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस. सो प्रोफाइल ऑफ लाइन को वी कैन से लाइक 2D, लाइक 2D कुछ कर्व्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्रोफाइल ऑफ लाइन का यूज करेंगे. और अगर हमारी प्रोफाइल 3D में है कुछ, क्लियर है, तो उसके लिए हम लोग प्रोफाइल ऑफ सरफेस का यूज करेंगे. It is mostly used in complex surfaces and normally हम लोग प्रोफाइल ऑफ लाइन का यूज कर लेते हैं. So we can see like it is controlled by datums. So we see here like A and B is our datum and A and B दोनों के रिस्पेक्ट में है जो प्रोफाइल ऑफ सरफेस की वैल्यू लिखी है वो हमारी 0.03 मतलब कि हमारा 30 माइक्रोन्स में होनी चाहिए. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन. So orientation is a very important when we think about like we will play with angles. So perpendicularity parallelism is a very common, like perpendicularity means कि हमारा जो भी कुछ datum रहने वाला है उस पे 90 डिग्री एग्जैक्ट होना चाहिए. It means कि orientations all group of orientations GDNTs required datum necessary condition. And second is a parallelism. So it means कि हमारा जो datum है उसके साथ 0 डिग्री के साथ होना चाहिए. ये दोनों बहुत कॉमन एंड सिंपल थे. अभी बात आई एंगुलरिटी की. एंगुलरिटी इट मींस के कुछ स्पेसिफाई वैल्यू होगी हमारे पास एंगल्स, उसके रिस्पेक्ट में हमको उसको मेजर करना है. एक परपेंडिकुलरिटी इज रिलेटिव टू राइट एंगल. सो कंट्रोल ओरिएंटेशन रिलेटिव टू राइट एंगल मींस के हमारा जो भी डेटम है उसके रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे आना चाहिए. एंड सेकंड लाइक पैरेललिज्म इट्स लाइक 0 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट इज एंगुलरिटी. तो एंगुलरिटी इज लाइक आर्बिट्ररी एंगल होगा कुछ हमारे पास, कुछ एंगल्स के रिपोर्ट में होना चाहिए. जीडीएनटी के जितने भी सिंबल्स है ना वो सारे लीनियर में ही मेजरमेंट्स होते हैं.
Like if I am talking about like here angle is a 60, then also it's convert into our indirectly, मतलब हम लोग उसको linear dimensions में लेंगे और उसके accordingly decide करेंगे कि भाई यहाँ पे हमारी angularity है कि नहीं. Clear? So right now we मीन्स अगर हम लोग कुछ मैन्युअल प्रोसेस करने वाले हैं तो हमारे पास डायल ही ज्यादातर यूज होता है CDNT सिंबल्स के लिए. अगर हम लोग कुछ एडवांस वर्जन्स में जाते हैं तो CMM मीन्स हमारे पास बहुत से ऑप्शंस है राइट नाउ. Now last is a location, true position, concentricity and symmetricity. Yeah. So true position means हमारे पास कोई होल है, उसकी होल की दो रेफरेंस के साथ या किसी एक रेफरेंस के साथ उसकी पोजीशन चेक करना है तो उसके रिगार्डिंग. Concentricity like दो सर्कल्स के सेंटर सेम होना चाहिए. It's a very common symbol. Like we can also see like shaft का मतलब जो स्टेप है वो दोनों का concentric होना चाहिए. Otherwise means it's vowels create vowels. Clear? So it's also like use concentricity अगर मेजर नहीं करने तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस भी है. तो वो दो जो टूल्स है वो स्पेशल है, रन आउट एंड टोटल रन आउट. It's control many small kind of geometries like circularities में all we can control if I'm using like only run out. Symmetricity is a controls mirror features. तो it's also need a datum, like एक datum होगा हमारे पास, उसके रिस्पेक्ट में सामने सामने की दोनों की सरफेसेस या कुछ भी चीज है फीचर्स तो वो हमारे क्या होंगे सिमेट्रिक होंगे. क्लियर. नेक्स्ट very important run out and total run out. It is very difficult and mostly ये डायनेमिक सिचुएशंस में यूज होता है. स्टैटिक कंडीशंस में हमारे सर्कुलर रन आउट एंड टोटल रन आउट की नेसेसरी कभी भी नहीं हो सकती है. क्लियर है. सो ये डायनेमिक मीन्स हमारा कंपोनेंट किसी भी तरह का रिवॉल्व होने वाला है या कुछ रोटेट होने वाला है या मूव होने वाला है अपनी जगह से, तब जब हमको कुछ डायमेंशंस या जियोमेट्रीज के रिगार्डिंग कुछ चाहिए लाइक कुछ टाइट मतलब टाइट टॉलरेंसेस चाहिए या कुछ जियोमेट्रीज का कुछ फंक्शनल ऐसा हमको करवाना है डायनेमिक कंडीशंस में और वो एकदम एक्यूरेट से होना चाहिए. इट्स लाइक इफेक्ट मोर इफेक्ट इफ दे आर नॉट कंट्रोल. तो देयर केस हम लोग वी कैन यूज अ रन आउट लाइक सर्कुलर रन आउट एंड टोटल रन आउट. So here like so first of all circular run out. Circular run out minimize wobble. तो wobble मतलब वो क्या करेगा concentricity and राउंडनेस दोनों को अगर हम लोग साथ में मेजर कर रहे हैं किसी रिलेवेंट फीचर्स के साथ लाइक हम लोग स्टेप का ओडी को भी मतलब दोनों राउंडनेस को भी मेजर कर रहे हैं और उसके साथ उसकी कॉन्सेंट्रिक को भी मेजर कर रहे हैं, तब हम लोग दोनों का जो एक क्या होगा ग्राफ बनेगा लाइक वैल्यूज हमारे पास आएगी, वो जो होगी वो सर्कुलर राउंड में आएगी. क्लियर. तो इट मीन्स कि हमारे पास दो वैल्यू होने चाहिए राउंड से ऑब्जेक्ट्स और उसके साथ उसके कॉन्सेंट्रिसिटी प्लस उसमें हमने क्या ऐड कर दिया है सर्कुलरिटी. तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सर्कुलर रन आउट है. क्लियर. एंड टोटल रन आउट ऑल्सो कवर लेंथ. इट मीन्स कि कवर अ फ्लैटनेस ऑफ सर्कुलर सरफेस. मीन्स के हमने अभी क्या किया सर्कुलरिटी मेजर करना है, कॉन्सेंट्रिसिटी भी मेजर करना है और उसके साथ साथ उसकी जो स्ट्रेटनेस है मतलब के वॉल सरफेस में अभी कॉन्सेंट्रिसिटी एंड राउंडनेस दोनों जो चीज है ना वो पॉइंट कॉन्टेक्ट में रहती है, मतलब कि एक ही पॉइंट में हम लोग मेजर करते हैं. अभी जैसे स्ट्रेटनेस की बात करें तो वो कैसे एक पॉइंट में ही मेजर होती है. अभी फ्लैटनेस की बात करें तो टोटली प्लेन में मेजर होती है. लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइंट्स हम लोग ले सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई इसकी फ्लैटनेस नहीं है. क्लियर. ओके है तो फ्लैटनेस बोल सकते हैं भाई ये पार्ट जो है वो फ्लैटनेस इसकी कंट्रोल में है. बट अभी टोटल राउंड क्या करेगा उसकी सिलेंड्रिसिटी सर्क्युलरिटी एंड कॉन्सेंट्रिसिटी तीनों को सेम टाइम पे मेजर करेगी और तीनों ओके मतलब हमारे रिजल्ट्स में अगर कंट्रोल में आएगी तब हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पार्ट इज अ टोटली मतलब हम जो बोल रहे हैं टोटल रन आउट में है मतलब कंट्रोल किया है हमने. मोस्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड लाइक हेवी लाइक टर्बाइंस है वो सब में ज्यादातर टोटल रन आउट एंड रन आउट का यूज होता है. इसमें भी डेटा तो नेसेसरी है क्योंकि इतना सब आया लाइक कॉन्सेंट्रिसिटी वो सब. तो नाउ कैप्चरिंग अबाउट जीडीएनटी इन कैड. सो क्या करते हैं मतलब हम लोग को जीडीएनटी सिंबल्स कैड के थ्रू भी रख सकते हैं. सम सॉफ्टवेयर एज प्रोवाइड अवर लाइक
मतलब सारे सॉफ्टवेयर हमको प्रोवाइड नहीं करते हैं ये सब चीज का GD&T के रिगार्डिंग, लाइक बेसिक सॉफ्टवेयर से बात कर ले ऑटोकैड, so it's provide but it's not a totally solution of GD&T. सो अगर हमको अच्छे से कुछ कैप्चर्स करना है तो लाइक हमको कुछ पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए, तो वहां पे हमको अच्छे से GD&T फीचर्स का लाइक ड्राफ्टिंग ऑप्शंस रहते हैं, वहां पे मिलते हैं ऑप्शंस। तो लाइक सॉलिडवर्क्स है तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको अवेलेबल। इट इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली एंड मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर in a CAD parametric software and mostly user friendly software. It's like we can also say like made for students only, स्टूडेंट्स के लिए बना है ऐसा बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल GD&T अगर CAD में करना है तो क्या क्या हमको चीज को मतलब कंसिडरेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू सिंबल, अंडरस्टैंड डेटा, अंडरस्टैंड कंट्रोल फ्रेम एंड अंडरस्टैंड मॉडिफायर्स। तो मॉडिफायर्स क्या रहता है हमने ऑलरेडी लर्न किया। Yeah, so this is all about GD&T. Clear? If any have any questions, then you can ask. Yes, Nayan sir. If any have questions, then Thank you so much, Mr. Mayank, sir. If any students have yeah, any sir. question, you can write down on my mobile number 971 445 8809. We are just wait for 1 or 2 minutes. Okay. Yeah, sir. If any questions, like Yes, there is one question from the student. okay. How do we as a design engineer update ourselves with the latest trend and techniques? या सो एज भी मीन्स मैंने पहले लाइक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली कि अगर आपको डिजाइन इंजीनियर्स में कुछ करना है, आगे कुछ बढ़ना है, तो दो तीन चीज थी। लाइक हम लोग अभी राइट नाउ जनरेशन्स में क्या है, जैसे स्टैंडर्ड्स जो पार्ट्स थे वो सारे डिजाइन हो गए हैं ऑलरेडी। लाइक मैंने पहले ही बोला था कि ड्राइव है, लाइक पहले सोचना पड़ता था कि यहाँ पे कौन सा ड्राइव रखो, अभी हमारे पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। लॉट्स ऑफ कंपनीज ने अपने कैटलॉग्स भी ऑलरेडी शेयर करके रखे हैं मार्केट्स में, तो वहां से हम लोग वो सब चीज ले सकते हैं। सो राइट नाउ अगर कुछ जनरेशन या एनी टेक्निक्स में सजेस्ट करना चाहूंगा तो इट्स ऑल अबाउट लाइक क्रिएटिविटी। यू वॉट एवर यू हैव अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस तो ग्रब इट एंड जस्ट क्रिएट बाय योर सेल्फ ओनली। क्लियर? यूजिंग सम कैट टूल्स। क्लियर? तो लाइक आपको किसी मतलब अभी जो टेक्निक्स यूज कर सकता हूँ तो मैं वही बोल सकता हूँ कि आपको एक कैट टूल्स आना जरूरी है। क्लियर? उसके साथ आप जा सकते हो, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन मार्केट। सो इट्स बेस्टेस्ट टेक्निक्स इन कम लाइक मतलब डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए एक शॉर्टकट्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? या so my answer is like CAD tools is a great technique, best. Any another question? Thank you. Don't have Yeah, any okay. other question. Okay. Bye bye. Have a Thank you. nice day. Thank you, sir. Let's see it. Okay, sir. Sir, can I leave?
Sir, can I leave now?